Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another topic of the neuropharmacology. And now it's time for antidepressants, right? The treatment for the depression. Look, beta, there are two terminologies in opposite. One is the depression and one is the mania, right? Two different things to keep in the mind. Depression is kind of feeling of sadness and the hopelessness completely, and mania is just opposite of that. We'll go to that, but first you see the symptoms of depression. Number one thing is very much sadness. You keep sitting all the time at a place in the home, remain sad, going to enjoy some late night party, going to attend some wedding ceremony. Everybody is having some really good dance at the party, and you're sitting alone in the chair, on the chair at the corner. You're feeling very much sad. Even when the music is on, you're still feeling sad. Even your favorite music is on, you're still feeling sad, not being happy. Right? Hopelessness number two. Hopelessness. If people are hoping for really good, if let's suppose you are working somewhere and people are hoping to get some extra charges next month, but you feel hopeless. You might be thinking the charges will be deducted further. Right? So you see how I am actually trying to put into your mind. See, there is complete sadness and hopelessness. That's a depression. There is inability to experience pleasure in the usual activities. I try to have some pleasure doing different things. I try to go out, have some pleasure out there, have some walk, play some cricket, have fun out there, but they are unable. They want to do, but they end of the day sit inside the room. And also there is a changes in the sleep pattern. पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, दिन सोते हैं. And appetite is also altered. कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती. And there is the loss of the energy. You feel very much tired all the times. Energy is lost. Energy is lost, and you have lack of the energy. And obviously, every new thing needs some energy. You go out, you want to go out, you want to go somewhere, you want to do something, you need energy. But in this case, the energy is lost. And the really important thing is the suicidal thoughts may be there in the later stages. However, mania is something very much opposite. It is characterized by the very much opposite behavior. Like there is enthusiasm. जितना डिप्रेशन में पेशेंट एंडोलेंट क्या कहूँ मैं इसको, जितना पेशेंट डिप्रेशन में सैड होता है, कम बोलता है, चुप रहता है, कोने में रहता है, मेनिया उसका बिल्कुल अपोजिट है. एक्टिव रहेगा, एंग्री रहेगा, रैपिड थॉट्स होंगी, स्पीच पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पेशेंट टॉकेटिव होगा. इसका पेशेंट तो बोलता ही नहीं है. मेनिया का काफ़ी टॉकेटिव होगा, स्पीच पैटर्न उसका रैपिड होगा, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस. यहाँ पे पेशेंट वाज क्वाइट होपलेस, बट हियर यू सी द पेशेंट इज एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड with impaired judgment. Right? You will better understand these terms in the psychiatry, but for now I hope you have some idea at least in your mind that what's the comparison in between these two. Now the topic of our study is to discuss the antidepressant drugs. The general mechanism of the antidepressant drugs is most drugs potentiate either directly or indirectly the action of the norepinephrine and or serotonin in the brain. These two are the neurotransmitters which have role in the depression. You will better understand here. Depression is due to deficiency of monoamines like your norepinephrine, serotonin. When these hormones are reduced, when these hormones are decreased in your body, so you may feel the symptoms of the depression, right? To get rid of this, you have to increase these monoamines. You have to increase these monoamines in your brain, right? And mania is caused by our production of these neurotransmitters. Both are opposite things, na? The depression is due to deficiency of norepinephrine and serotonin. Mania is due to the overproduction of these neurotransmitters, right? So as we are talking about the antidepressants, so we'll try to increase these serotonin and norepinephrine, right? Okay. At very first is, okay,
Yeah, these are the drugs, SSRIs, that will increase the serotonin levels. What was the problem in depression? Reduced amount of monoamines, like reduced norepinephrine, reduced serotonin. We have to increase it. Let's first increase the serotonin level by providing the selective serotonin reuptake inhibitors. These are the drugs which inhibit the reuptake of the serotonin. If this is the, you see, presynaptic end, this is the postsynaptic end, this is the, you see, serotonin being produced, and it is released here and it goes here and produces the excitatory neurotransmission, and you feel happy and you feel joyful. But what happens is, obviously in case of depression, there is deficiency of this serotonin. A little amount of serotonin is there, and वो भी रीअपटेक हो जाता है वापस. तो हम क्या करते हैं, SSRIs देते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. वो SSRIs क्या करती हैं, इस रीअपटेक को रोक देती हैं, और जो सेरोटोनिन होता है काफ़ी देर के लिए यहाँ अवेलेबल रहता है, तो फिर एक्साइटेशन होती रहती है और आप डिप्रेशन के सिम्टम्स से बच जाते हो. ठीक है बेटा. दे इनहिबिट द सेरोटोनिन रीअपटेक, राइट. Unlike tricyclic antidepressants and serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, they are non-selectively inhibit the reuptake of both norepinephrine and serotonin. I mean to say, the SSRIs, they are selective serotonin reuptake inhibitors. They only inhibit the reuptake of serotonin, allowing more serotonin to be available here and be ready for the postsynaptic neurotransmission. These drugs are only selective for serotonin. लेकिन कुछ और कैटेगरी के एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. They are non-selective. They not only inhibit the reuptake of serotonin, they also inhibit the reuptake of norepinephrine as well. Okay, inhibit the reuptake of both norepinephrine and serotonin. I am talking about tricyclic antidepressants and serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Okay. The SSRIs, that are the selective serotonin reuptake inhibitors, they also have little blocking activity at मेन काम SSRIs का यही है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकना. लेकिन इसके अलावा हम मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी काम कर सकते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक पे भी, और हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स पे भी. नॉट रियली इफेक्टिव, बट SSRIs, along with inhibiting the reuptake of serotonin, SSRIs can also act on these receptors, can block the muscarinic receptor, block the adrenergic receptor, block the histamine receptor. Now the SSRIs have largely replaced tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors. So they are like now talk of the town. They have been, people are using this for the treatment of depression. Previously we used to यूज़ these tricyclic antidepressant पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट SSRIs यूज़ होती हैं, इसकी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट यूज़ नहीं होती. ठीक है बेटा, इस तरीके से. अगर इन SSRIs को तफसील में डिस्कस करते हैं. ओके, किस कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं और सारी चीज़ें. द ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन द SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors. Number 1 is the fluoxetine. ये ड्रग्स याद करनी पड़ेंगी बेटा आपको. कुछ 4 ड्रग्स तो आप याद कर ही सकते हैं. इसका FCPS, राइट. फ्लूऑक्सेटीन, राइट. citalopram, whatever you pronounce. And the P is paroxetine and S is sertraline. Paroxetine, sertraline. बाकी बच गई आपकी fluvoxamine and escitalopram. ये एक ओरिजिनल ड्रग नहीं है. इट इज़ एक्चुअली द प्योर एस एनेंशियोमर ऑफ द सिटालोप्राम. सिटालोप्राम से ही ये डिराइव होती है. सिटालोप्राम का एनेंशियोमर है एस्किटालोप्राम, राइट. सो दिस इज़ द फ्लूऑक्सेटीन, सिटालोप्राम, paroxetine, sertraline. बाकी escitalopram और fluvoxamine. Right beta, so this is how it goes. What about the mechanism of action? It's quite simple, it's obvious. SSRIs क्या करते हैं, they block the serotonin reuptake. So synaptic cleft में serotonin ज़्यादा वक्त के लिए अवेलेबल रहता है और उतना post synaptic जो neuronal transmission है उसको बरकरार रखता है. Simple. The main thing is now the onset of the action. After taking this drug, how long does this drug take to produce effects? It may take 2 weeks to produce significant improvement in the mood.
Obviously, right now if I take sertraline, I used to have this sertraline couple of years back. I had some symptoms of depression. I took sertraline, got better in couple of weeks. Didn't take too much time. So the thing is, look, if now I take sertraline, it will produce some effects, but for significant mood changes, significant improvement in mood, उसके लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट में रिक्वायर अप टू 12 वीक्स आर मोर. ठीक है, तो 3 महीने के लिए डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि लेते रहें, ताकि एक सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रोड्यूस हों. व्हाट अबाउट द थेरापीटिक यूजेस ऑफ दिस ड्रग? ये कहना तो काफ़ी आसान है कि इसको हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में देते हैं, लेकिन वाई नॉट टू प्रिसाइज इट. Look, primary indication of this SSRIs is depression, right? डिप्रेशन में देते हैं. डिप्रेशन में जो सारे मसले मसाइल होते हैं ना, जो पीछे डिस्कस किए, मूड चेंजेस, मूड चेंजेस के अलावा सुसाइडल थाट्स, वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. अदर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स जिसमें हम ये SSRIs यूज़ कर सकते हैं, OCD में यूज़ कर सकते हैं बेटा, पैनिक डिसऑर्डर्स में, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको GAD के नाम से जाना जाता है, ट्रामा के बाद जो स्ट्रेस हो जाता है, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो डर बैठ जाता है और जो खौफ बैठ जाता है, द पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें सोशल एंजाइटी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोजा. कहने का देखें, ये तो सारी जो भी कंडीशंस हैं, यूल बेटर अंडरस्टैंड इन द साइकाट्री लेक्चर्स, इंशाल्लाह विल बी कमिंग वेरी सून. But for now, you keep in your mind that SSRI's primary indication do use these drugs in depression. But don't forget, they have got some effects in these other problems as well, especially the OCD के अंदर. बुलिमिया नर्वोसा से बचने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं SSRIs को, खास करके जो फ्लूऑक्सीटिन है उसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों. ठीक हो गया, चलें. आफ्टर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापीटिक यूजेस, वी कैन नाउ गो टू फार्माकोकाइनेटिक्स. ऑरली ये ड्रग्स लेते हैं और इंटेस्टाइन से बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं. प्लाज्मा में पीक लेवल्स इसके पहुंचते पहुंचते 2 से 8 घंटे लग जाते हैं. ना भी याद करें तो चल जाएगा, पर यह बात याद रखनी पड़ेगी कि फूड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन. तो मेक श्योर करें कि खाने से पहले खाली पेट पे खाया जाए, एक्सेप्ट सर्ट्रालिन. आई मीन एक चीज़ इसको क्लियर करते हैं. आई थिंक आई phrased it incorrectly, but now rephrase it correctly. Food have little effect on absorption except sertraline. बाकी जितनी भी आपकी बेटा जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो आप ओरली लें, इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इतना तंग नहीं करेंगे, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे. फूड का काफ़ी कम इम्पेक्ट होगा इनकी एब्जॉर्प्शन पे, सिवाय सर्ट्रालिन के. सर्ट्रालिन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है अगर पेट में फूड है तो. फूड इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्ट्रालिन. नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्रग्स हैं बेटा, देयर एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड अ वेरी मच लिटिल व्हेन देयर इज़ फूड, वेरी लिटिल इफेक्ट. बट व्हेन कम्स टू सर्ट्रालिन, फूड का काफ़ी इम्पेक्ट होता है इसके एब्जॉर्प्शन पे. फूड होगा स्टमक में तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. नाउ यू सी, फूड हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट सर्ट्रालिन. सर्ट्रालिन जो है इट एक्चुअली इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्ट्रालिन. एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय फूड. ओके, प्लाज्मा हाफ लाइफ इज़ रियली गुड, 16 to 36 आवर्स. लेकिन फ्लूऑक्सीटिन की इससे भी ज़्यादा होती है, जो कि बुलिमिया नर्वोसा में यूज़ कर रहे थे. इट्स लॉन्गर हाफ लाइफ अप टू 50 आवर्स, राइट? सो या मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है विद हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450, और इसकी कंजुगेशन भी होती है साथ में लिवर के अंदर. कंजुगेट किसके साथ करते हो आप SSRIs को? या ग्लूक्रोनाइड के साथ या सल्फाइड मोइटी के साथ आप कंजुगेट करते हो, प्लस ऐड कर देते हो और कंजुगेशन हो जाती है. उसके बाद फिर वो मेटाबोलाइट एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है बच्चों, याद रखें. जहाँ तक बात है ड्रग इंटरेक्शन की, तो डोंट फॉरगेट 2 SSRIs हैं. ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, फ्लूऑक्सीटिन और पैरोक्सीटिन. बोथ आर इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम P450 2D6. बोथ आर इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम P450 2D6. सो मेक श्योर करेंगे इन दोनों ड्रग्स को उन ड्रग्स के साथ में ना दें, those drugs which are metabolized by 2D6, because their metabolism will be affected, because these two are the drugs which are inhibiting the
2D6 enzyme. Right after this bit, I will be talking about the adverse effects of the selective serotonin reuptake inhibitors. Right, beta, so now talk about the adverse effects of the SSRIs. Obviously, very much less side effects compared to other antidepressants like tricyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors. I mean to say, well, look, there is a big list of adverse effects even with SSRIs, but compared to other antidepressants, very side effects are there, right? List of the adverse effects. Let's talk about all one by one. One is the sleep disturbances. स्लीप पैटर्न कैसे डिस्टर्ब करती हैं आपकी SSRIs, ड्रग पे डिपेंड करता है. पैरोक्सिटीन और फ्लूवॉक्समीन ये सीडेटिंग होती हैं, ज़्यादा नींद करवाती हैं, ज़्यादा कामिंग प्रॉपर्टी आती है आपके अंदर. ये फ्लूवॉक्समीन थी, ठीक है. फ्लूऑक्सिटीन और सर्ट्रालिन ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग होती हैं, ये सीडेशन नहीं कराती, आपको जगा के रखती हैं. ये सारी सी बात है. फिर आप डिपेंड करता है कौन सी ड्रग ले रहे हो, तो फिर उस हिसाब से स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होंगी. दूसरा बड़ा एडवर्स इफेक्ट बेटा SSRIs कंज्यूम करने का, सेक्शुअल डिसफंक्शन. सेक्शुअल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, द डिज़ायर इज़ एक्चुअली लॉस. अगर डिज़ायर लॉस नहीं हुई तो फिर काफ़ी डिलेड इजैकुलेशन होती है. बहुत टाइम लेने के बाद, बहुत सेक्शुअल स्टिमुलेशन के बाद जाके एजैकुलेट होता है. और उसके अलावा वो हो सकता है इतना डिले हो, मतलब एन ऑर्गेजमिया हो सकता है, ऑर्गेजम अचीव ना हो. यू माइट बी हैविंग सम गुड टाइम विथ योर पार्टनर बट स्टिल अनेबल टू हिट दैट स्पॉट, राइट, टू अचीव द ऑर्गेजम. So this is the big problem with antidepressants, right? Okay, what about the use of this drug in children and teenagers? Fluoxetine, sertraline and fluvoxamine, they are used in children to treat OCD, and especially the fluoxetine and escitalopram, they are used for the treatment of the childhood depression. वैसे तो एडल्ट्स के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाइल्डहुड डिप्रेशन है फ़र्ज़ करें, तो उसमें कौन सी SSRIs प्रिफरेबल होती हैं? फ्लूऑक्सिटीन और एस्किटालोप्राम. और जहाँ तक बात है बच्चों में OCD को ट्रीट करने के लिए, तो आपको पता है बेटा SSRIs तो एंटी डिप्रेसेंट के अलावा दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि OCD के अंदर. बच्चों के अंदर OCD को ट्रीट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस SSRIs, फ्लूऑक्समीन, सर्ट्रालिन, फ्लूऑक्सिटीन. ठीक बच्चों, इस तरीके से. लास्टली द ओवरडोज ऑफ द SSRIs बेटा. वाट अगर इसका ओवरडोज हो जाए, सर्ट्रालिन का, फ्लूवॉक्समीन का, द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट टॉक्सिसिटी, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी द कार्डियक एरिथमियाज. खास करके सिटालोप्राम की ओवरडोज से कार्डियक एरिथमियाज, खास करके क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाएगी. ठीक है, ओवरडोज से, ऐसे नहीं. अच्छा, उसके अलावा सीजर्स, because all SSRIs lowers the seizures threshold. They can cause the seizures, right? That may lead to, this is actually the abnormal neuronal activities in your brain. Okay, and another problem that can occur with the overdosing is the serotonin syndrome. What does these SSRIs do? This is the presynaptic neuron, this is the postsynaptic neuron. The serotonin is coming right over here. Okay, you see this is the good looking serotonin, and the SSRIs are doing what? They are actually inhibiting this step, this reuptake. reuptake को inhibit करते हैं कौन? SSRIs. तो serotonin काफ़ी देर के लिए अवेलेबल होता है, और अगर काफ़ी देर के लिए अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, तो serotonin एक्सेसिव होने की वजह से serotonin syndrome हो सकता है, especially when used in combination with the MAO inhibitors are highly serotonergic drugs. अगर आप SSRIs यूज़ कर रहे हो साथ में MAO inhibitors के साथ, थोड़ा सा समझाऊँ अगर, तो बेटा देखो, ये serotonin यहाँ पे मेटाबोलाइज होता है into inactive metabolite with the help of enzyme monoamine oxidase. ठीक है बेटा. अब प्रॉब्लम क्या था डिप्रेशन के अंदर, कि सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी थी. हमने क्या किया? SSRIs दिए, तो SSRIs ने क्या किया? इनके रीअपटेक को रोक दिया,
और यहाँ पे SSRIs काफ़ी वक्त के लिए अवेलेबल रहने लगी। और साथ में अगर आप इसको भी इनहिबिट कर देंगे, MAO इनहिबिटर देके इस एंजाइम को भी, तो ये सेरोटोनिन मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, यानी कि इसके मेटाबोलाइज होने का रास्ता भी बंद हो गया, रीअपटेक होने का रास्ता भी बंद हो गया। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में यहाँ जमा हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है प्रॉब्लम बेटा? सेरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या क्या आ जाता है? पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम हाइपरथर्मिया, स्टेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ जाएगी। उसके अलावा मसल काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, मसल रिजिडिटी, देयर इज स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। मायोक्लोनस, मायोक्लोनस द सडन brief and involuntary jerky contractions of the muscles, right? There are the changes in the mental status of the patient, and the vitals are also disturbed. Normally you provide SSRIs, it's okay, the serotonin reuptake is inhibited and serotonin is available, and it acts on the postsynaptic neuron and you get rid of symptoms of the depression. But अगर आपने SSRIs का भी हाई डोज दिया है, ओवर डोज दिया है, साथ में MAO इनहिबिटर्स भी दे रहे हो, तो सेरोटोनिन काफ़ी बढ़ जाएगा और सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, राइट बेटा। सो हियर इज द डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं बेटा, सर्ट्रालिन, फ्लुवॉक्सामिन, व्हाटएवर, you have to gradually taper the drug, right? अगर एब्रप्टली विड्रॉल करेंगे तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो जाएगा। और लोवेस्ट रिस्क इज़ विद द फ्लूऑक्सीटिन, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। जितनी भी SSRIs में हमने बताई आपको, सर्ट्रालिन, फ्लूवॉक्सामिन, फ्लूऑक्सीटिन, और जितनी भी SSRIs थी, वो सारी डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम करा सकती हैं अगर एब्रप्टली विड्रॉ करोगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ड्रग है फ्लूऑक्सीटिन, इसमें अगर आप एब्रप्टली भी विड्रॉ करते हो तो भी रिस्क कम होता है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का। ओके, लेट सपोज हमने सर्ट्रालिन को एब्रप्टली विड्रॉ किया तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होगा, और पेशेंट किस चीज़ से सफ़र करेगा? कंप्लेन ऑफ द हेडेक, मलेस, फ्लू लाइक सिम्टम्स, स्टेट ऑफ एजिटेशन, हर वक्त इरिटेबिलिटी का रहना, नर्वस रहना पेशेंट का, और स्लीप पैटर्न का चेंज होना। ठीक है बच्चा, डिप्रेशन के सिम्टम्स से बचने के लिए SSRIs दी थी, और SSRIs सडनली बंद कर दी हमने, तो तकरीबन वही डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगे बेटा। सो बी केयरफुल। दिस इज ऑल अबाउट बेटा SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors that were inhibiting the reuptake of serotonin only. That is why we were calling them selective. Now we'll be talking about the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. These are non-selective drugs. Why? Because they inhibit the reuptake of not only the serotonin but the norepinephrine as well, right? Let's talk about these.